Okay. So let me start. तो हम उसी पे कुछ exercises कर सकते हैं. हमने comparison test किए. So let's see. तो उससे थोड़ा क्या होता है? You know, there is no hard and fast rule. कैसे करें? But there are certain rules, ना? There are certain hints जो हमें मिलती है किसी सीरीज को जब हम compare करते हैं. जैसे for example, एक exercise ये हो सकती है. Show that this series. Now look at this series. 1 into 2 पहली term इसकी ये multiplication है, point नहीं है यहाँ पे, divided by 3 square into 4 square plus 3 into 4, okay, 3 into 4 divided by 5 square into 6 square plus 5 into 6 divided by फिर आना चाहिए 7 square into 8 square. अगर हम इसी तरह से ऐड करते जाएं तो we have to show that this must converge. So अगर हम इसकी nth term ढूंढे तो nth term इस सीरीज की क्या होगी? nth term of this series होगी, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, so it should be an, as we can see ऊपर आना चाहिए. These are just 1 2, then I have 3 4. So जो पहला वाला नंबर है वो odd है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n-1 से, और दूसरा जो है वो उससे एक बड़ा है, so it should be just 2n, right? In the denominator ये इससे 2 बड़ा है ना, it's 1 फिर 3 है, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, so 2n-1 से जो 2 बड़ा हो, right? तो वरना मैं इनको आपस में देखूं तो it should be actually 2n+1 का स्क्वायर, जो इसकी nth टर्म, into 2n+2 का स्क्वायर. So this is, हम फिर चेक कर सकते हैं क्या ये nth टर्म इसकी है. तो अगर मैं इसको 1 देता हूँ, so it would be 1 into 2, और नीचे आएगा 3 into 4 अगर n को 1 देते हैं. अगर 2 देंगे so it would be 3 into 4, और नीचे आएगा 2 अगर है तो 5 square, 6 square. So it's okay. So it is the nth term. Now we have to show that summation an runs from 1 to infinity converges. अब अगर हम इस पे जरा गौर करें तो इसमें जो हाईएस्ट पावर n का होगा वो इन द न्यूमरेटर इज n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा n4. और भी कुछ टर्म्स होंगी, लेकिन जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 2 3 4 मैटर नहीं करेंगे ना, तो दूसरी n क्यूब, n स्क्वायर, जो लोअर पावर्स है वो मैटर नहीं करेंगे. So we can assume that it would behave somewhat similar to 1 by n square. उससे मुझे आइडिया मिलेगा अगर मुझे इसको कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो दूसरी सीरीज कौन सी होनी चाहिए. So now consider bn equal to 1 by n square. Then if I want to evaluate, I want to do the comparison. Limit n approaches infinity, an divided by bn should be equal to an तो ये है, bn से मैंने डिवाइड किया तो ये n स्क्वायर हो जाएगा. Limit n approaches infinity, n square into 2n-1 into 2n divided by twice n+1 का square into twice n+2 का square. And let's see what happens to this limit. So that would be limit n approaches infinity. इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4n square, तो ये आएगा 4n raised to power 4, right, minus, then it would be 2n cube. 4 कैसे आ गया, फिर 2 ही आना चाहिए, twice n raised to power 4, 4. मैंने ठीक लिखा. Let me write it down. 2 to the 4 n square to n raised to power 4, 2 is 2. We have twice n cube. In the denominator, I would have denominator में तो कुछ है ही नहीं, so it would be just 2n plus 1 का square
into 2n plus 2 per square. Now I divide both numerator and denominator by n raised to power 4. So that would be equal to, it would be 4 minus 2 by n, और नीचे जब मैं n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा वो बन जाएगा 2n n raised to power 4 से, सॉरी तो मैं ऐसे लिखूंगा n स्क्वायर 2n plus 2 एंड 4 से मैंने डिवाइड किया तो इसको मैं n स्क्वायर दूंगा, इसको n स्क्वायर दूंगा, and limit n approaches infinity, so that would be equal to limit n approaches infinity. As you can see हमें क्या मिल रहा है, it will be of some finite non-zero number 4 divided by 2n, और यहाँ n स्क्वायर अंदर तो n बन जाएगा, so it would be 2 plus 1 by n का स्क्वायर into 2 plus 2 by n the whole square. Now, as n approaches infinity, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0. So it is actually 4 divided by 2 square into 2 square. Whatever it is finite, non-zero number. So therefore, I can say, therefore, summation an, n runs from 1 to infinity, and summation bn, n runs from 1 to infinity, converge and diverge together. अगर एक converge करेगा दूसरा भी होगा, एक diverge करेगी एक सीरीज तो दूसरी भी सीरीज, but since summation 1 by n square जो है हमारा summation bn converges, so therefore जो summation an है जो given series थी also converges. Okay, तो ये हमने प्रूव कर दिया. इसी तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे ये, चलो एक और सीरीज हो सकती है, चलो एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं कि इसका क्या होगा, 1 into 1 into 2 into 3 plus 3 divided by 2 into 3 into 4 plus 5 divided by 3 into 4 into 5. मतलब ये ऑड नंबर्स है और नीचे इसी के हिसाब से. तो अगर मैं कहूँ कि हियर, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो हियर an जो है nth टर्म उसको मैं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स 2n minus 1 है न्यूमरेटर में, ऑड नंबर्स है, और नीचे क्या है, इट इज n into n plus 1 into n plus 2. नाउ इफ आई लुक एट दिस, जो मैंने कहा कि ऊपर जो हाईएस्ट पावर ऑफ n है वो 1 है, नीचे 3 है, सो दिस शुड बिहेव समवट सिमिलर टू 1 by n स्क्वायर. तो इसको भी तुम 1 by n स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे, सो दिस मस्ट कन्वर्ज. लेकिन मैं जो हमने ऊपर किया वो तुम फॉलो करोगे साथ, यानी तुम फिर लोगे bn को 1 by n स्क्वायर और उसके साथ कंपेयर करोगे, एंड यू विल सी दैट this divided by this would converge to some non-zero positive number, or since bn diverges, summation bn diverges, summation an will also converge, summation an will also converge, right? Because summation 1 by n squared converges. Now इसी तरह से एक ले सकते हैं, जो यहाँ लगा है, एक और एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. How about this summation 1 by root of n into n plus 1. n runs from 1 to infinity. तो इसमें जो हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में है वो है बेसिकली रूट ऑफ n स्क्वायर. So it is somewhat similar to, which is the same thing as 1 by n. और हमें पता है ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है, so we should assume that this will also diverge. But to prove it by comparison test हम करेंगे let an be equal to root of n into n plus 1, right? And bn be equal to 1 by n. So an divided by b sub n is equal to n divided by root of n into n plus 1, which would be equal to 1 by root of n divided by n plus 1 divided by n square. So that would be equal to 1 by root of 1 plus 1 by n. Now if you take the limit as n approaches infinity, this is equal to limit n approaches infinity,
Let n as approaches infinity, this is just equal to 1, a finite non-zero number. So therefore जो भी ये summation bn करेगी अगर वो converge करेगी तो ये भी, लेकिन हमें पता है ये diverge करती है, done it harmonic series, so therefore this must also diverge. तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं what should be our सीरीज जिसके साथ हम कंपेयर करें और फिर हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करें। जैसे सपोज ये है समेशन, ये ऐसा ही एक है, ये भी मैं तुम्हें ऐसे ही बताऊंगा। तो इट इज n रेज पावर p, तो व्हेन वुड दिस कन्वर्ज, p का वैल्यू क्या होना चाहिए? अब हमें पता है इट इज रफली समेशन 1 by n रेज पावर p minus 1, तो हमें इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहिए, उससे हमें मिलेगा कि it would converge if and only if p minus 1 is bigger than 1, that is p is bigger than 2. अगर p bigger than 2 है, so this must converge, but that is your home assignment. मैंने बता दिया किसके साथ कंपेयर करना है। Then we could have something like this. Summation 1 by, जब भी तुम्हें इस तरह का मिले, चलो ये इसको चेक करना है, तो इसको ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, इसको पहले रैशनलाइज करोगे। तो तुम अगर लिखोगे let a and b equal to what, 1 by root n plus root of n plus 1, इसको रैशनलाइज करने के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे root n minus root of n plus 1, तो फिर न्यूमरेटर में भी आएगा मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ, which will be root of n minus root of n minus 1. So that would be root of n minus root of n minus 1. And as you can see, a plus b into a minus b is a square minus b square. For n plus 1. n plus 1 n plus 1. Good. So that's equal to ऊपर क्यों? under root of n minus under root of n plus 1. Oh yes. हाँ ठीक है हाँ ऊपर इस स्टेप में भी यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। So it is a minus b to n and cancel, so it should be I think root of n plus 1 minus root of n, अभी नीचे minus 1 है। Now we can just write this as 1 by, it's pretty much clear, it's not that clear, but I can write it as n plus 1 raised power minus 1 by 2 minus 1 by n raised power, and we know that this would diverge. Why? Because minus 1 by 2 is less than 1. P series test. तो ये भी diverge करेगी, ये भी diverge करेगी, which means that that would diverge. ठीक है ना? यानी मेरा जो summation an है, it is equal to summation 1 by n plus 1. Converge करेगी, diverge करेगी? Diverge ही करना चाहिए वैसे। राइट, तो अगर n अप्रोच करता है इंफिनिटी को, ये तो 0 हो रहा है, दैट्स ओके। विल इट कन्वर्ज और डाइवर्ज? अगर हम ऐसे देखें तो देन दिस डाइवर्जेस एंड दिस डाइवर्जेस, लेकिन अब चूंकि ये है माइनस, इट इज समथिंग लाइक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो इसलिए हमें थोड़ा इसको देखना पड़ेगा ना। Infinity minus infinity is indeterminate, so there is some kind of L'Hopital's rule going on. So how do we counter it? अगर हम root n से इसको करेंगे तो नहीं। Now let's see, अच्छा एक्सरसाइज है, मुझे ध्यान नहीं पड़ा। देखो पता है मेरी बात समझ में क्यों आ रही है? I know that this diverges, I know that this diverges, so this is infinity. लेकिन ये infinity कैंसिल भी हो सकते हैं ना, आपस में ये टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, and it need not become very very large. तो जब भी infinity minus infinity आए, उस टाइम किसी भी जगह कोई कैलकुलेशन करते हुए अगर तुम्हें कुछ ऐसा मिल रहा है, सर infinity minus infinity का कैसे कैंसिल हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ। तो जब भी तुम देखो ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कहीं भी तुम्हें कैलकुलेशन में कुछ ऐसा मिले, सो उस वक्त क्या होता है, ये वर्ड याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उसको उस टाइम चेक कर, उसको ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए कैंसिल होगा, राइट? क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी के साथ कैंसिल नहीं होती।
तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स 0 0 मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी यू टू बी केयरफुल। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने कहा था ना अभी ये डाइवर्ज होगी बिकॉज माइनस, हाँ ये इंडिविजुअली डाइवर्ज होगी, ये इंडिविजुअली डाइवर्ज होगी, दैट डजंट मीन दिस वुड डाइवर्ज। तो बस मुझे यही कहना था ना। तो क्वेश्चन हमारा अभी भी वैसे का वैसा ही है कि ये सीरीज इस सीरीज के बराबर है। so let's see summation root of n plus 1 minus root n के बराबर है n runs from 1 to infinity। अब हम एक और टेस्ट कर सकते हैं कि if n becomes very very large, है ना, हमारा एक था कि एक है ना हमारा ये अप्रोच लिमिट n approaches infinity। If n becomes very very large, so this will become 0, right? हाँ तो एनीवेज, तो अगर हम रूट n के साथ इसको कंपेयर करते तो क्या होता, रूट n के साथ अगर इसको कंपेयर करें, मेरे कहने का मतलब हाँ 1/रूट n के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए। तो दैट्स गुड। तो इस तरह से ये मतलब खैर यहाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता चल गया कि इसके बराबर है, तो वी शुड कंपेयर इट विद दिस 1/√n। सो जब 1/√n से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा यहीं पे रैशनलाइज किए बगैर ही, क्योंकि रैशनलाइजेशन से हमें कुछ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, सो वी वांट टू अवॉइड दिस, सो देयरफॉर वी डायरेक्टली कंपेयर इट विद 1/√n। सो अगर मेरा an है बराबर 1/√n plus root of n plus 1, let's take bn to be 1/√n, then an divided by bn होगा बराबर √n divided by √n plus √n plus 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ, ये मैं √n से डिवाइड कर सकता हूँ, so it would be 1/1 plus root of 1 plus 1 by n. And if we let limit n approaches infinity, so this would be equal to 1/2, finite and non-zero, और चूंकि summation 1/√n diverges, therefore summation an भी diverges। मतलब ये rationalize करने से हमें मतलब ये भी सही तरीका हो सकता था, लेकिन ये माइनस जो बीच में आ गया उसकी गड़बड़ हो सकती थी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, सो वी जस्ट अवॉइड दैट। जब भी ऐसा हो हमने कोई दूसरा सोचा कि अगर हम डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर करेंगे, so therefore it must diverge because summation 1/√n diverges। इसी तरह से you could have, how about this summation 1/n square, n runs from 1 to infinity। so obviously इसमें ये obvious ये रूल है कि हमें पता है ये जो लिमिट है, we know that limit x approaches 0, sine of 1 by sine x divided by x is equal to 1, which implies that if x is positive, then I can say x approaches infinity provided x is positive, sine of 1 by x divided by 1 by x is equal to 1. So which means that chunki n be positive hai, I can say limit n approaches infinity, sine of 1n by square 1 by n square is equal to 1, a finite non-zero number। तो इसका मतलब therefore by comparison test summation sine of 1 by n square n runs from 1 to infinity and summation 1 by n square n runs from 1 to infinity converge and diverge together। So and since जैसे कि हमें पता है summation 1 by n square converges, therefore summation sine 1 by n square and runs from 1 to infinity must also converge। इससे पहले हमने किया था summation sine 1 by n जो है and runs from 1 to infinity diverges, लेकिन summation 1 by n square या 1 by n cube would converge। Similarly, how about this summation n runs from 1 to infinity cos of 1 by n? Now इसमें तो ये possible ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लिमिट
n approaches infinity, cos of 1 by n is just equal to 1, क्योंकि जब n infinity होगा 1 by n 0 हो जाएगा और cos of 0 is 1, और ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई so therefore it has to diverge, क्योंकि अगर ये converge करती तो इसका लिमिट 0 हो जाना चाहिए था. So therefore, so which is not equal to 0, so therefore I can directly conclude that cos of 1 by n transformed to infinity diverges. तो इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं. जैसे मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, कौन सा, चलो ये कर लो, समेशन 1 by रूट n. मैं चाहूंगा तुम अभी जो हमने किया उसको याद रखना, tan of 1 by n. तो ये जो सीरीज है तो तुम चेक करोगे कि whether it converges or diverges. वो मैं समझ. इसी तरह से समेशन मैं कर सकता हूँ e raised power minus n square n runs on to infinity. You just compare, so it is actually better है, इसको पहले ऐसे लिखे हम, तो ये खुद ही कह रहा है मुझे किसके साथ कंपेयर करना. So let this be equal to summation n runs on to infinity, where n is equal to 1 by e raised to power n square. So let जो कंपैरिजन वाली सीरीज है इसमें हमेशा ऐसे ही लेना चाहिए. जब मैं एक्सपोनेंशियल देखो तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का पावर है उसी का ले लो, 1 by n स्क्वायर है. अगर यहाँ 1 क्यूब होता तो मैं भी करता. एंड तुम देखोगे लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, a n by b n is equal to limit n approaches infinity n square divided by e raised to power n square. Now this is infinity by infinity, so we just apply L'Hopital's rule. काम खत्म. क्यों? जब L'Hopital's rule हम इसमें लगाएंगे तो you will get 2n in the denominator, you will get 2n into e raised to power n square. So you already cancel, so that would be limit n approaches infinity. So as n approaches infinity, e raised to power n becomes very very large, very very fast. So this is equal to 0. तो अगर ये जब ये 0 होता है तो उस वक्त रूल है कि अगर डिनोमिनेटर वाली सीरीज जो है बी एन है, अगर कन्वर्ज करेगी तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी. अगर फाइनाइट नॉन जीरो होता है तो सिर्फ कन्वर्जेंस सेम नहीं होती, डाइवर्जेंस भी सेम होती है. लेकिन अगर 0 है तो कन्वर्जेंस सेम होती है. मेरे कहने का मतलब है इट इंप्लाइज दैट समेशन ए एन एंड ट्रांसफॉर्म टू इंफिनिटी कन्वर्जेस if summation bn and transform to infinity converges. But we know that summation n transform to infinity bn is equal to summation n transform to infinity 1 by n square जो है ये converge करती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, या p टेस्ट से हो जाता है. So therefore summation n transform to infinity en also converges. तो एक और एग्जाम्पल हो गई, और भी हम कर सकते हैं. चलो ये एक अच्छी है. इट इज वन, सपोज एक्सरसाइज ये हो सकती है 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 cube, 3 cube, हाँ ठीक है, plus 1 by 4 raised to power 4. So here मैं कह सकता हूँ इसकी जो nth टर्म होगी, जैसा कि तुम देख सकते हो, a sub n is equal to 1 by n raised to power n. Now if n is bigger than 2, I can say n raised to power n is bigger than 2 raised to power n. So which implies that, what does it imply? It implies that 1 by n raised to power n is less than 1 by 2 raised to power n for all n greater than equal to n. ठीक है ना? So if bn is let to be 1 by 2 raised to power n, we see that an is less than bn for all n bigger than equal to 2.
आई थिंक आई शुड से बिगर देन इक्वल टू 3 क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो डजंट मैटर अगर ये 50 भी होता, लाख भी होता, आफ्टर दैट तो भी ये अगर ये कन्वर्ज करती तो ये भी कन्वर्ज करता। So what does that mean? That means, and since summation bn n runs from 1 to infinity converges, why does it converge? Because it's a geometric series of common ratio half. So therefore this must converge. Therefore by comparison test, summation an n runs from 1 to infinity also converges. Okay, और भी हम कर सकते हैं, और क्या करें? Okay, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ इसके बारे में। summation n runs from 1 to infinity 5 raised to power n plus 5 divided by 3 raised to power n plus 2। तो मैं चाहूंगा मतलब this should behave like 5 by 3 raised to power n। तो इसके साथ इसको कंपेयर करना, नहीं तुम लेना अपनी, अगर इसको तुम an मानोगे तुम कंपैरिजन के लिए bn लेना 5 raised power n 3 raised to power n। तुम देखोगे फिर it would diverge because this diverges because it's a geometric series with common ratio bigger than 1. 5 by 3 is bigger than 1. Similarly, you can show that summation, ये भी दिखा सकते हो, summation what n square 1 by n square log of n, तुम देख सकते हो this also converges. Compare it with n square because log n is very very tiny when n becomes very very large compared to n square, उससे तो बहुत छोटा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it should behave something similar to this, therefore it must converge. Okay. So और कोई हो सकता है? हाँ ये है, हाँ ये उससे बेटर है जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना, कहाँ गया वो था माइनस, अगर नहीं माइनस होता वहीं से। So suppose you take this series, देखो यहाँ पे वो खतरा नहीं है, ऐसे ही मुझे ख्याल है ये। If I want to check this series, नहीं divided by n, so इसको पहले रैशनलाइज करेंगे क्योंकि जब हम रैशनलाइज करेंगे तो प्लस आएगा नीचे, तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले से हम बच जाएंगे। So roughly speaking this is अगर मैं इसको 1/2 लूं, सो चेक करते हैं। सो अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, सो दिस इज द सेम एज n plus 1 minus n minus 1 into n plus 1 plus n minus 1 divided by n, so that into n, ये कन्वर्ज करने वाली है भैया, यहाँ प्लस होना चाहिए। ओके, तो मैंने सेम चीज से किया, n runs from 1 to infinity, n runs from 1 to infinity, infinity. So this can be written as summation n runs from 1 to infinity. This should be n plus 1 minus n minus 1 to divided by n into root of n plus 1 plus root of n minus 1. So n cancel, so this should be actually summation n runs from 1 to infinity twice n into square root of n plus 1 minus square root of n minus 1. तो highest power जो है नीचे, roughly it should behave with like this, n raised to power 1.5, so that is 3/2. so ये converge करती है, तो तुम इसको compare करोगे इसी सीरीज के साथ जैसे हमने किया है अभी an by bn है ना, जो this should be similar to this, so therefore this must converge, और roughly तुम अंदाजा लगा सकते हो इससे। तो then I have this, चलो ये तुम कर लो home assignment, summation n runs from 1 to infinity at n raised to power 4 minus 1
जो मैंने अभी किया वैसे ही कुछ करना है तुम्हें and see what, though it should converge, I think, because it should behave something similar to summation 1 by n squared. क्योंकि न्यूमरेटर में कैंसिलेशन हो जाएगी. ओके, सो हमने काफी सारी एग्जांपल्स की, कंपैरिजन टेस्ट की. तुम बुक्स पे जो देखोगे उसमें भी कर लेना, और मैंने कुछ होम असाइनमेंट दिए तो वो भी कर लेना. So let's come to another test, what we call Cauchy's root test. Cauchy's root test says that if summation an and runs down to infinity is a positive term series, यानी जो numbers है वो positive है, such that limit n approaches infinity, a n raised to power 1 by n, यानी इसका nth root जो term का है, eventually it approaches a limit say L, then ये जो series है, then the series converges if L is less than 1. Second, it diverges if this limit L is bigger than 1. तीसरा है the test would fail. Test अगर L equal to 1 है, अगर ये limit 1 है, तो we can't tell, इसके basis पे हम कुछ conclude नहीं कर सकते. Proof बड़ा ही simple है actually. Basically this means ये जो ये condition है, this means eventually it's like a क्या बोलते हैं geometric series, because then an is equal to, after n becomes very large, an is some L raised to power n. तो after इसका मतलब L जब n जब बहुत बड़ा हो जाता है, the series behaves like a geometric series, and geometric series में हमें पता है कि अगर L less than 1 है तो क्या होता है, L1 greater than 1 है तो diverge होता है. वही है इसके पीछे भी क्या बोलते हैं राज. Now 0 is clearly 0 is less than L is less than 1, because this is a positive thing, so limit positive होना चाहिए. So we choose an epsilon. We can always choose epsilon positive such that 0 is less than L plus epsilon is less than 1. है ना? Because you can always choose some gamma, some positive number between any two numbers. तो यहाँ L और 1 के दरमियान है. Take epsilon to be equal to L minus gamma, then you would have what? Then you would have L plus gamma. तो मैंने क्या कर दिया? Gamma minus L. Epsilon which is positive, और साथ में you would have gamma is equal to L plus epsilon, which would be less than. Okay, anyways, because gamma is less than 1. So you can always choose an epsilon such that this is true. So, and since limit n approaches infinity, a n raised to power 1 by n, so the nth root is equal to L. Therefore, by the definition of the limit, therefore, for any epsilon positive, there exists, so in particular this epsilon. So I can say then for this epsilon, actually for any epsilon positive by definition, although in particular for this epsilon positive, which has this property. So any epsilon positive क्या होना चाहिए? There exists a natural number m belonging to the set of natural numbers such that modulus of a sub n raised to power n minus 1 minus L is less than epsilon for all n bigger than equal to L, which implies, जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, that a sub n whole raised to power 1 by n is less than L plus epsilon but bigger than L minus epsilon for all n bigger than equal to m, which implies L minus epsilon
is less than raised to power n is less than an is less than n plus epsilon raised to power n for all n bigger than equal to n. So which implies that n is less than equal to alpha times n for all n bigger than equal to n, where alpha is less than 1. यानी alpha बराबर है L plus epsilon के, so which is less than 1. And since summation alpha n runs from to infinity converges, because it's a geometric series with common threshold less than 1, therefore by comparison test, summation n runs from to infinity also converges. Second part, if L is bigger than 1, then we can choose epsilon positive by the same reasoning, such that L plus epsilon is bigger than 1. And we will have Sir, L minus epsilon. नहीं L plus L minus epsilon. नहीं, अब L plus epsilon हो सकता है, क्योंकि अगर L bigger than 1 है, 1 is less than L, तो I can choose obviously L plus epsilon, हाँ L minus epsilon, you're right. हम इसको पीछे जाएंगे थोड़ा सा, L plus epsilon यहाँ, तो हम यहाँ L minus epsilon को bigger than 1 ले सकते हैं. By the same reasoning, मैं क्या मानूंगा between these two numbers, so that L minus epsilon is bigger than 1. So anyway, so by the same, and we have L, there exists, then there exists. Actually, मुझे जल्दी ये खत्म होने वाला है, चाहता हूँ पूरा हो जाए. M belonging to set of natural numbers such that L minus epsilon raised to power n is less than n is less than L plus epsilon raised to power n for all n greater than equal to n. तो अगर ऐसा है, which implies that ये जो इसको अगर हम बीटा याद रखें, बीटा रेज